I think we can start now. Okay, so am I audible clearly? Yes, ma'am, you're audible. Okay. So welcome everyone. This is the basic awareness training on the quality management system, which is QMS. Essentially based on the requirements of ISO 9001-2015 and QCI NABET version 3. So what all are the objectives of this training? It is first and foremost to familiarize the staff with what is QMS, what are its structure and its key processes. What is ISO 9001, 2015 NABET accreditation requirements? What are the roles and responsibilities of each and every one within the QMS? And the compliance with the document procedures, policies, to encourage each of all with the involvement in quality initiatives and to build a better understanding of what is quality audit processes, findings, and corrective actions. What is QMS? So essentially a QMS is a structured way to run an organization. In a short way, we can say a QMS is a Bible and a booklet on how to run an organization. It helps deliver consistent quality being the major term here, improve efficiency and to support continual improvement. A QMS includes a set of procedures, responsibilities, and records to guide the staff in order to doing quality work every time. Eventually, it supports customer satisfaction and helps the organization to grow with a fewer errors, better coordination, and more accountability. The type of work we were doing in the year 2015 and the type of work we are doing in 2020-25 is obviously much better and has improved over the years with the help of QMS, which leads to higher customer satisfaction. So you've got a basic idea what actually is a QMS, what does it cover, and how does it work. Coming to the current QMS, this QMS is version issue number 05 with revision 00 and the issue date is 20th March 2024. This is the latest approved version and it should always be referred. This is prepared in the requirements as per the requirements of international standard ISO 9001-2015, NABET QCI, EIA and GWCO. So GWCO is included in it while we are trying to prepare a separate manual for GWCO requirements also. Coming to the structure of the QMS, it has three sections, Section A, Section B, and Section C. Section A is the quality manual, which has the guiding principles of both ISO and NABET. Section 2 and Section B and Section C are of much use to us. Section B has the quality procedure manuals. Basically, those are the know-how or the instructions, and Section C has the forms, formats, and checklists. Now, what are ISO 9001-2015 clauses? तब से हम ये सुन रहे हैं ISO. What is 9001 and 2015 clauses? So ISO is an international management system standard, and 9001 and 2015 strictly adheres to quality management. It has process approach, customer focus, and risk-based thinking. These are very specific and technical terms. What is a process approach? There is a process of each and every work. Okay, and customer focus is the main thing, and risk-based thinking. What is risk? So risk and opportunities are two major terms in this. Risk, for example, if you try to understand it, suppose there is a process, say baseline data collection. Okay, we have to identify a risk in it. So a risk that could be identified as inaccuracy in data collection, maybe due to uh, staff fault or a faulty equipment. What is the action to address that risk is calibration of instruments and timely staff trainings, adherence to SOPs. Now the term is opportunity. Opportunity is what? From this risk, we have identified an opportunity is of upskilling the staff in a separate technique, say GIS training or remote training. So you have understood what is risk and what is opportunity? Anybody? Trainings, how can training staff be an opportunity? Pardon, एक बार जोर से बोलना please. मैम एक बार ये
How can training staff be an opportunity? इस पे थोड़ा elaborate कर सकते हैं? हाँ, इस पे ये बता सकते हैं, जैसे हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क इज इनएक्यूरेट बेसलाइन डेटा कलेक्शन, राइट? उस किस वजह से हुआ ये? स्टाफ की फॉल्ट से या इनकरेक्ट या फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से। दिस इज द रिस्क। हमने उसके लिए एक्शन क्या लिया? कैलिब्रेशन, टाइमली कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या स्टाफ की ट्रेनिंग, ठीक है? इस रिस्क में से हमने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी अपने स्टाफ को बेटर अपस्किल करने के लिए। जैसे हमने किसी एक चीज में हमारी प्रॉब्लम आई, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अगर हम अपने स्टाफ को अपस्किल करें, नई ट्रेनिंग्स दें, तो it is an opportunity for learning and to grow and to get better. Understood? ठीक है? जी आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मैं बोल भी रही हूँ, सुनाई दे रहा है या नहीं। मैम बोल रही हूँ, शायद आवाज आ नहीं रही आपके पास। मैं कह रही हूँ समझ में आ गया, वी कैन प्रोसीड मैम। एक सेकेंड, अभी क्लियर? अभी आ रही है मैम आवाज? हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ आ गया समझ में, थैंक यू। Okay. Now, what are the QMS? Why does a QMS follow ISO clauses? So basically, ISO clauses give us an approach of systematic framework. It directly aligns with the requirements of this QMS. It has an auditable structure which ensures transparency and compliance and consistency and traceability, which you'll be able to understand further. So ISO 9001 2015 has 10 clauses from clause number 1 to clause number 10, and from clause 4 to clause 10 are of us important. Like clause number 4 is context, which gives an understanding of the internal and external issues, identify interested parties and define QMS. Clause 5 is leadership, which defines roles and responsibilities and establish quality policy. Clause 6 is planning. It addresses risk and opportunities and set quality objectives and to plan QMS changes. Clause 7 is support, which maintains control of documents. Clause 8 is operation, which includes planning and execution of operations and includes customer requirements and procurement. Clause 9 is performance evaluation, and clause 10 is customer satisfaction improvement. Now, what is the distribution of quality manual? Quality manual is not to be shared with any external agency. It requires written approval from director, management, or the MR. It has uncontrolled and controlled copies and a master copy. So what is an uncontrolled copy and what is a controlled copy? An uncontrolled copy is issued for reference purpose only and is not subject to any change. Controlled copies are stamped in red. It is only with the management and the MR, and the management master copy is held by the director only. समझ में आया what is controlled and uncontrolled copies? जी मैम। Okay. So this is a typical sequence of interaction of QMS. This is based on the Plan Do Check Act sequence. It has some inputs, a process, and a output. So the inputs are customer requirements, need and expectations of the interested parties, and then clause 7, 8, 9, 6, and 10 are included in the process. Okay, and then the outcome is customer satisfaction, products and services. This is the result of the QMS. Coming to the quality policy, which is very important, we are expected by NABIT to learn this, by heart this, word by word. And can anyone read this for me? Shefali? जोर से आपको बात नहीं जाएगी। Quality policy. Gaurang Environmental Solutions Private Limited is committed to provide complete environmental services and solutions, including preparation of EIA and groundwater hydrogeological report to the satisfaction of our stakeholders. ठीक है, रुको एक मिनट। Gaurang ये होल्ड ये सेंटेंस, ये पूरा पैरा किसको समझ में नहीं आया?
It is not just a sentence. एक एक word का it holds meaning, and it is framed as per the requirement and checkpoints issued by NABET. So it is committed. Committed word is very important. To what? Complete environmental solutions and GWI, hydrological reports preparation, satisfaction of our stakeholders. Stakeholders, what is stakeholders? कि कोई है जो stakeholders word का meaning नहीं समझता? Everybody knows? So I assume सबको पता है. आगे पढ़ो. Gaurang Environmental Solution Private Limited is committed to all the statutory and regulatory requirements related to the services and solutions in the line with the customers' requirements and follow a framework within the organization which helps to set the objectives and carry out reviews periodically for the continual improvement. The quality policy with its true intent is communicated within the organization and all the stakeholders. Okay, thank you. So ये जो quality policy that we have devised, एक एक word holds some meaning. Okay, so the first word being GSPL is committed to all the statutory and regulatory requirements. जितने भी statutory and regulatory requirements है, we have to abide by them. Okay, and this should reflect in each and every report of ours, each and every service and solution which we offer. It follows a framework. So there is a complete process. It follows a framework within the organization. It follows a hierarchy within the organization. Who is the supreme person? Who reports to whom? Okay. And what are the objectives to carry out reviews periodically? Whatever we do is reviewed periodically. For what? For continual improvement. To get our reports better over the time. Okay. The quality policy with its true intent is communicated within the organization and all the stakeholders. This is also required by NABET that this quality policy is understood. मैंने क्यों आपसे पढ़ने के लिए कहा कोई भी ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया है तो वो अभी पूछ सकता है because it is to be understood by each and every person, it is to be learnt by each and every person, and it is to be communicated and to be presented each and everywhere all at all the important places of the organization. आपने देखा होगा halls में हमारा जो मीटिंग हॉल है वहां पर लगा हुआ है, वर्क स्टेशन के वहां लगा है या नहीं मुझे नहीं ध्यान है, सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हमारी क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स लगे हुए हैं. ठीक है. इट इज टू बी कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स. सो किसी को नहीं समझ में आया तो अभी आप पूछ सकते हो. एंड इट इज रिक्वायर्ड. किसी को भी रैंडमली असेसमेंट के टाइम पर बुला के ईच एंड एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज अ क्वालिटी पॉलिसी. तो हमें ये लर्न करना ही पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस. ओके. How have we shared it with all the stakeholders? वी शुड जो हम क्वालिटी अपने जो कंपनी वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी बुकलेट हम जो भेजते हैं क्लाइंट्स को, इट शुड हैव क्वालिटी पॉलिसी. कंपनी प्रोफाइल जैसे हम कहते हैं, इट शुड हैव अ क्वालिटी पॉलिसी. एंड ईच ऑफ सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको क्वालिटी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, जो आई थिंक अभी हमारे एक प्रोसेस नहीं है कि क्वालिटी पॉलिसी हम सबको बताएं. राइट. तो वी शुड मेक श्योर कि क्वालिटी पॉलिसी सबको पता होनी चाहिए. सो करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये आप लोगों को सबको पता है, हर जगह डिस्प्लेड है. करेक्ट. Now coming to the next major term, which is quality objectives, and what is the planning to achieve them. Quality objectives are a set of goals that an organization set to achieve its improvement in the quality of its services and processes. They are SMART, not looks wala SMART. SMART is a term जिसका S का मतलब है specific, M is measurable, A is achievable, R is relevant, and T is timed. For example, if I say a statement like improve customer satisfaction, this is a vague statement. And a SMART statement is increase customer satisfaction score from 82% to 90% within the next 12 months. So आपको दिख रहा होगा कि ये जो second वाला statement है, this is much better than the first one. Okay. इसी तरह से we have devised these 5 quality objectives. एक एक करके we will analyze the same. First is to increase the turnover of the company by 20% every year. Is it specific? Yes. It focuses on turnover.
Is it measurable? How much is the increase in turnover? 20%. Is it achievable? Presumably achievable. Is it relevant to our business? Yes, because it supports growth. And is it time bound? Every year. So each and every quality objective has a specific measurable, achievable, relevant and time bound meaning. We all can go through it. मैं एक बार एक पढ़ूं हर एक करके, या आप लोग इसको बाद में देख लोगे? ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ. First one हो गया. Second is to reduce the average turnaround time for completing EIA reports by 10% within 1 year. अब आप पूछोगे मैम 10% ऑफ व्हाट, राइट? तो हम जो पर चार्ट्स रेडी करते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए, हमें एक पर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें मेजर करना है कि हर एक EIA रिपोर्ट का कंप्लीशन टाइम कितना था. सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम समझ पाएंगे कि हमारा जो यूजुअल टाइम है उससे हमने कितना रिड्यूस किया. करेक्ट. Third is to decrease the EDS, ADS or queries raised on the EIA or GWI reports from client or regulatory authorities by 40% in the next 30 months. Fourth is to reduce the carbon footprint by planting 10 trees per employee every year. And fifth is transitioning to the online portal in the next 1 year for optimizing service output and quality. So all these quality objectives, I assume, are very smart. अगर आपको इनमें से कोई सा भी ऐसा लगता है विच इज नॉट स्मार्ट एज पर यू, या इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, तो वी कैन वर्क अराउंड इट एंड वी कैन ट्राई टू चेंज इट. ठीक है. नेक्स्ट. Now, what are the quality procedures and NABIT compliances? We have a set of quality procedures which are mentioned in the part B of the quality manual. These are the quality procedures. One by one, we'll take it. So, quality procedures are devised on the requirements of ISO and NABIT, and similarly, procedure numbers also have been devised according to that. Like, for example, the first one is about quality policy. So ISO clause number 5.2 is about quality policy, and NABIT SOP reference number B1 is on quality policy. So the procedure numbers comes out to be GESPL/QP/5.2. Okay. This is for procedure of development of quality policy. So some of them are required by NABIT and a few, like 3 or 4, are not required by NABIT, but for running of our organization, we have devised those, which are mentioned in the bottom, like for credibility and appropriateness of QA measures, IT system, and setting up of measurable objectives. We can go through it one by one. Understanding what are documents and records. Anybody jisko idea hai what is document and record without reading it? These two terms are somewhat similar, used interchangeably. Okay, so a document provides instructions or guidelines for any kind of work. They're dynamic and subject to version control. For example, a quality manual and an SOP is a document. What is a record? Records are evidences of activities or results. These are evidences, what have been done. They are static, maintained for accountability and audit. For example, a document guides action, while a record captures what was done. For example, checklist, जो हम clients को भेजते हैं, that's a blank checklist is a document, and a filled up checklist is a record. Got it? Now, these are the quality procedures. We can go through them one by one. First is for development of quality policy. This defines how quality policy is drafted as per the requirements of ISO and NABIT. Second, 7.5 is for control of documents and records. This ensures proper identification, review, approval, storage, and traceability of documents. Third, performance management and review. Sabke appraisals, KPIs, monitoring are all defined in this. Next is procedure for assessing, ensuring the quality of EI reports prepared. This includes the complete steps of developing a EI report. Okay. And 7.2C is for improving skills, which includes training. This defines how training needs identified, conducted, and evaluated to enhance expert competence. Then comes procedure for periodic and systematic audit and follow-ups. Now, what is an internal audit? Audit का idea सबको है थोड़ा बहुत? It's not. बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है.
ठीक है, ऑडिट्स इंटरनल भी हो सकती है ना, एक्सटर्नल भी होती हैं. नैबिट हमें बाउंड करता है कि वी शुड have internal audits timely in an organization. So what is an audit? It is a planned activity, a systematic review conducted within the organization to see if the QMS of the company is working or not. Okay. What happens in an audit? It identified gaps. कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ gaps हैं, क्या non conformances आ रहे हैं, what all can be done to improve the effectiveness of QMS. ठीक है, हमारी QMS में we have decided to conduct internal audit once a year. After audit comes MRM, which is management review meeting. The findings of the internal audit are discussed in the MRM, and on the basis of the results of the audit, corrective actions have been taken or not. What are the key performance indicators and only the quality related data. The management is only concerned with MRM. Okay, the management should not be concerned with the day-to-day working of the QMS. So the goal is to evaluate the system's effectiveness. MRM का गोल होता है कि हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमारी हायरार्की ढंग से फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, नॉन कन्फॉर्मेंसेस पे करेक्टिव एक्शन लिया गया है या नहीं. करेक्ट. तो MRMs also are conducted annually. Internal audit and MRM for this year is pending, and hopefully we'll conduct it this month or next month. Okay. कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या है QMS, क्या है ये टर्म्स, न्यू पीपल? So the next procedure is for management review of EIA reports and necessary follow-up. ये procedure पहले हमारे QMS में cover नहीं हुआ था, recently हमें ये include करना पड़ा है ताकि हमारी जो EIA reports हैं and जो follow-ups हैं वो better हो जाए. ओके, आप लोगों को पूरे QMS को गो थ्रू करना ही पड़ेगा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज जस्ट द जिस्ट ऑफ इट, जस्ट टू नो, जस्ट टू मेक यू पीपल नो कि व्हाट इज QMS, है क्या ये QMS, क्यों बार बार इसके पीछे पड़ते रहते हैं. आप QMS देखो, नैबिट है, QMS है, QMS है, जस्ट टू गो थ्रू इट कि एक्चुअली इसमें है क्या, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसीजर इज फॉर इंटरनल रिव्यू मीटिंग्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, जो हम क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ मीटिंग करते हैं, साइट विजिट्स करते हैं, उनके हमें इंटरनल मिनट्स किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोसीजर. Procedure number 10.2 is for the action taken to address non-conformances. Non-conformance, observations, corrective action, preventive action, root cause analysis. Very technical terms. ठीक है, we should know the meaning of it. What is a non-conformance? Any act or something which fails to meet the requirements of QMS या ISO, or when something does not meet the requirement standard rules, meaning there is a mistake, that is called a non-conformance. इससे नीचे होता है observation, a noted issue lacking enough evidence to declare non-conformance. Non-conformance is a bigger thing, NC जिसे हम कहते हैं. अगर हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है या वो इतना स्ट्रॉन्ग नॉन कन्फॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उसे एनसी की कैटेगरी में डालें, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जर्वेशन. When something looks like it might cause a problem, but there is not enough proof, it is called an observation. Okay. What is a corrective action? What all steps are taken to fix a problem after it has happened? It is called corrective action. And preventive action is the steps taken to stop a problem before it even happens. इन सबको करने के लिए हमें एक रूट कॉज एनालिसिस करना होता है, मीनिंग फाइंडिंग आउट द मेन कॉज और द मेन रीजन व्हाई a non-conformance happened or why an observation happened. That is called root cause analysis. Any question? ठीक है. Next is a procedure for identification, retention and assessment of impanel experts. Impanel experts के लिए हमने एक अलग बिल्कुल सेपरेट प्रोसीजर बनाया हुआ है. उसके अंदर उनकी क्या TORs होंगे, उनको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, क्या उनके KPIs हैं और उनका फीडबैक किस तरीके से रहेगा. That is all included in this procedure. Next is for collection and measurement of primary data. Very important. This is to be improvised with the help of experts, especially for SE and EB. Next, procedure for collection, synthesis and interpretation of secondary data. Secondary data कौन बताएगा मुझे, secondary data की जरूरत क्यों होती है? पूजा नहीं बताएगी, बाकी और कोई?
तन्वी, तन्वी है यहाँ? मैम, जो हम लोग फील्ड से प्राइमरी डेटा लेके आते हैं ना, उसको वैलिडेट करके बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा आगे आके बोलो। हम लोग तो प्राइमरी डाटा लेके आते हैं फील्ड से, प्राइमरी डेटा लेके आते हैं फील्ड से, तो उसको इनलाइन क्रॉस चेक करने के लिए, इनलाइन करने के लिए जो अपने सेकेंड डेटा का सोर्स है वो उस एरिया में वही आ रहा है, या हमारी जो डेटा लाया उसमें कुछ कमी थी, क्या थी, उसको क्रॉस चेक करने के लिए। ओके, ठीक है, और कोई? सो दिस इज पार्शियली करेक्ट। सेकेंडरी डेटा की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है, हमारे पास प्राइमरी डेटा तो हमें लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी जगह का प्राइमरी डेटा लेना है, लेकिन किसी वजह से हम वहां नहीं जा पा रहे, लिमिटेड डेटा सोर्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, कोई प्रेजेंट एंड पास्ट कंडीशंस को हमें कंपेयर करना है। In that case, secondary data is important. The secondary data is needed to complement the limited primary data. इसका मतलब ये नहीं है जो हम कर रहे हैं आजकल कि सेकेंडरी डेटा है तो हम साइट पर ना जाएं। नो, साइट पर जाना जरूरी है, लेकिन सेकेंडरी डेटा जो हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, टू अंडरस्टैंड पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस। टोपो शीट पर कुछ और दिखा रहा है कि टोपो शीट पर फुल ऑन एक रिवर दिखा रहे हैं, लेकिन साइट पर हम गए तो क्या है, एक बहुत छोटी सी नाला है, या है ही नहीं, सूखी पड़ी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पास्ट में और प्रेजेंट कंडीशंस में चेंज आ गया है। टू वेरीफाई दैट सेकेंडरी डेटा इज इंपॉर्टेंट। फिल गैप्स ड्यू टू टाइम या रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, support future predictions and to improve overall accuracy through verification. So secondary data is also equally important as well as the primary data. ठीक है? Next is the procedure for work outsourced. Work outsource क्यों करते हैं हम? Outsourcing क्या होता है? Anybody? तो बहुत ही बेसिक टर्म है वर्क आउटसोर्सिंग, मैं तो उसका सिर्फ मीनिंग पूछ रही हूँ। Okay, work outsourcing is any work which is not done by the in-house people, by the people of GESPL, which is to be done but requires expertise outside. Okay, this procedure sets a system for outsourcing work beyond the company's expertise. ठीक है? It covers selecting and approving qualified agencies. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मरीन स्टडीज हैं, मरीन स्टडीज हमारे ईबी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ड्यू टू सम रिस्ट्रेंट्स वो नहीं कर सकते हैं, या हमारे टोर के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई है कि हमें एक स्टडी करानी है विच इज नॉट द एक्सपर्टीज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज टू बी डन आउटसोर्स। तो ऐसा कोई काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें बाहर से कराना पड़ रहा है, इज कॉल्ड अ वर्क आउटसोर्सिंग। ठीक है? So this procedures clearly defines what works can be outsourced, किस तरीके से किया जाएगा, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और किस तरीके से उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा हम अपनी रिपोर्ट के अंदर रेलेवेंट पार्ट को डालेंगे। ठीक है? नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स। दिस इज मोर रिलेटेड टू द एडमिन टीम। किस तरीके से हम वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय NABIT, but we do have it. Procedure for laboratory work for baseline data collection. ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, कंटिन्यूस इसमें इंप्रूवमेंट होता रहता है, हमने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको गो थ्रू करें, इसके अंदर कोई भी कमी दिखती है तो वो हमें बताएं। इट इंश्योर्स लैब्स आर एंगेज फॉर सैम्पल कलेक्शन आर गुड, they have proper collection techniques, their instruments are to be calibrated, उनकी QA किस तरीके से होगी, and what all documents are to be maintained by that laboratory and by us as well. This is all defined in this procedure. Next very important procedure is about complaints and appeals. How can you address the complaints and appeals? हम किस तरीके से कंप्लेंट्स कर सकते हैं, या हमारी कंप्लेंट्स किस तरह से आई है उसे हमें कैसे असेस करना है, किस तरीके से एड्रेस करना है,
are all in this procedure. Okay. Next is procedure for QA measures. कोई बोला कुछ? नहीं मैम. Procedure for IT systems and for setting up of measurable objectives. So these are the major procedures. आप पूरे QMS को ढंग से पढ़ेंगे, एक एक प्रोसीजर को गो थ्रू करेंगे तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया. इसके अलावा वी हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑल द फंक्शनल एरियाज. ठीक है. These are the checklists. These are the format numbers. The part C, quality format. It has all the master list of documents, master list of records, and all the forms, formats, and checklists. Apart from that, we have a set of checklist for data collection from the project proponent, specially catered for existing expansion projects. Plus, we also customize our checklist based on the requirements of the sector or the project. Coming to the current accreditation status, we are category A consultants. The last assessment we scored 65.26%, which is barely qualifying performance. Anything above 60% is required for category A, and we got 65.26. What are the key updates that we made in the financial year 2024 and 25? So we have improved our quality procedures. Key performance indicators have been added. MRM agenda has been made comprehensive. MRM frequencies and outputs have been defined, and online generated forms have been included. Coming to the next thing, which is readiness for the upcoming assessment. So this time we are targeting a score of 77 out of 100 when we conduct a training out about NABIT. So I'll make you understand what is the marking criteria as per the different type of assessments. Okay. What is to be done for the upcoming assessment? Audit and MRM schedule is pending on our end. Record maintenance and project files, each and everyone has to prepare their own files, the project files, everything. SOP and procedure updates are to be done. Online forms are to be filled. Quality objectives are to be analyzed and checked whether these are done or not. Expert management, if there is any shortcoming of any expert, say for example, for a few functional areas, we are using category B experts for category A project, which is not allowed by NABIT. So we have to do that also. Secondary data handling is to be made strong. Laboratory and QA procedures are to be followed, and communication and grievances records are to be fulfilled. Like we have not got project completion certificates for a lot of projects. We have to take it from the clients. So coming to the end of this very short training, any questions? समझ में कुछ आया नहीं है किसी के? बहुत हल्का फुल्का समझ आया, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है. What is QMS? ठीक है. तो QMS को आप लोग ये मत समझो कि हम क्यों करें QMS, ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो MR का काम है, ये तो मैनेजमेंट देखे. काम ये सबका है. थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे, इसकी प्रोसीजर्स को गो थ्रू करेंगे, हम तरीके से अगर काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ इट अप्रेजल्स हमारे ही अच्छे होंगे. लास्ट मोमेंट का जो केओस है, जो असेसमेंट के टाइम पे होता है, वो कम होगा. ऐसी भी कंपनीज हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, NABIT आया NABIT गया, क्योंकि उनके सारी वर्किंग कंप्लीट है, उनके सारे प्रोसीजर्स वो लोग फॉलो करते हैं, सब फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, चेकलिस्ट सब कुछ रेडी है. उस तरीके से हम भी ट्राई कर सकते हैं कि हमारी भी कंपनी उस लेवल पर आए कि NABIT आ रहा है, असेसमेंट हो रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहे हैं हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से होगा, क्या होगा. हमारे काम हमें महीने महीने भर रोकने नहीं पड़ेंगे अगर हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे. ठीक है. आपको पढ़ना पड़ेगा. ये बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग थी, बहुत एक जस्ट दिया है मैंने क्या है QMS, किस एक आइडिया देने के लिए. मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके तो आज नहीं तो कल एक बार QMS पढ़ लो, तो जो अभी आया है वो फ्रेश दिमाग में थोड़ा उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. आप लोगों का टाइम बचा दिया मैंने. सॉरी, कुछ कहा? I want to say something actually, Yeah. because participation, I mean, thank you, first of all, thank you so much, Ginni ma'am, बहुत अच्छा presentation था.
काफी आइडिया लग thank गया you. कि हम QMS क्यों फॉलो करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज QMS, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली QMS इज। बट एक सरप्राइज मैं सबको देना चाहती हूँ, दैट विल बी हैविंग एन असेसमेंट ऑन QMS। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 5-10 मिनट्स है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, यू कैन ऑफ कोर्स आस्क गिनी मैम, अभी आप पूछ सकते हो सामने, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। बाकी असेसमेंट में आप मुझे बोलोगे आई डोंट नो एनीथिंग, QMS क्या है क्या नहीं है, नैपिड असेसमेंट होता है तब अगर आप जाके बोलते हो क्वालिटी पॉलिसी क्या है, आई डोंट नो, सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो Yes, स्टिल यू हैव likewise. टाइम, 5 मिनट्स आपके क्वालिटी पास है। पॉलिसी बिल्कुल ठीक बोला मैम ने। क्वालिटी पॉलिसी का आई नो ये बहुत ही अजीब बात है कि हमें वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए, बट इट इज रिक्वायर्ड बाय नैबिट। हमें क्वालिटी पॉलिसी पता होनी चाहिए। प्लीज ऐसा ना हो कि वहां जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है अभी आप पूछ सकते हो, तो हम लोग असेसमेंट के टाइम पे एकदम ब्लैंक नहीं रहेंगे। चेन्नई पीपल, एनी क्वेश्चंस? You're not Chanchu, are audible. you on mute? We can't hear you. No. No. No, I think you can type your question if you have any question because we can't hear you. एनीबडी एल्स? कोई और क्वेश्चंस है तो अभी पूछ सकते हो। I think गिनी मैम सब 100 out of 100 स्कोर करने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है। Let's see क्या स्कोर करते हैं, because they don't have any questions, क्यों रिक्वायर्ड है, कैसे है, क्या है, I mean ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एकदम Yeah. से नई चीज जो आती है या कोई इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं नॉन टेक्निकल जो है QMS से रिलेटेड, सब चीज एकदम से नहीं समझ आती है। तो मैं वही कहूंगी कि प्लीज गो थ्रू द QMS। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, और हम एक वापस से ट्रेनिंग एक सेशन कंडक्ट कर सकते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो सके उसके अंदर। कितना भी छोटा किसी भी तरह का क्वेश्चन है, वी आर रेडी टू आंसर। लेकिन QMS सबको पता होना चाहिए, सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगता है सबको पता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होता है, ये टर्म्स हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन सबका मीनिंग है। नैबिट के अंदर इनके बहुत स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। हो सकता है आपसे उठा के पूछ लिया जाए कि कोई भी XYZ पर्सन आके इनसे कोई भी किसी भी टर्म का मीनिंग पूछ सकता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एक बार गो थ्रू करो, समझो, इसको नहीं समझ आता है पूछो, और प्लीज इसको थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, ठीक है। तो मयूरी मैम, हम इसको अभी आप लोगों को मैंने बहुत जल्दी फ्री कर दिया। Sure. गिनी मैम Okay. एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑनलाइन जो भी अपना कैमरा ऑन कर ले, वी वांट टू टेक वन पिक्चर। Okay. हेलो मल्लिकार्जुन Chanchu, सर। are you there? Kansha, are you taking pictures? We are smiling, so at least everyone is smiling. मैडम आप ही नहीं दिख रहे इसके अंदर? गजेंद्र जी है क्या यहाँ पर? गजेंद्र जी है ना मैडम? गजेंद्र जी, सोशो वाला एक बार बेटर कर लो, प्रोसीजर जो है, चेकलिस्ट और
रिक्वायरमेंट्स हैं सोशो वाले, प्लीज उसको ठीक कर लो। आपको जो भी लगता है कि इसके अंदर नहीं कवर्ड है और जो हम अपने एसओपी के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आप मुझे भेज देना एक बारी। सिमिलरली महेंद्र जी, क्योंकि सोशो और ईबी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरियाज जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं फॉर बेसलाइन डेटा कलेक्शन। ठीक है, ओके, हो गई पिक्चर्स? ठीक है, तो शैल वी कंक्लूड? ओके मैडम। Okay, thank you so Thank you, much. Ginni. Thanks for Thanks. the presentation. Thank you, sir. Thank you. Ginni.